Hello kids, how are you all? Hope you are doing well at home. And today we are going to start our new chapter, that is the third chapter, and in NCERT book it is the eighth chapter of science. So here today we are going to study about the chapter how do organisms reproduce. So how do organisms reproduce? Before that we should know what is reproduction. Actually, reproduction is the process by which organisms produce young one of their own kind. Actually, they are similar to their parents, and own kind can be, you can say, multiple in number also. Although reproduction is not essential for an organism to stay alive, just like nutrition, respiration, excretion, but still, reproduction is the most important characteristic feature of all living organisms because it is important for the continuation of species. So, if any species cannot reproduce, then it cannot be found on the earth after few years. It will be vanished when its lifespan is over. So for the continuity of the species, it is very important. Okay, so here we can see reproduction ensure the continuity of life on earth. Actually, how it happens, chromosomes in the cell contains the information about inheritance of the features which are passed from one generation, that is their parents, to another generation to form DNA molecules in the offspring, you can say in their daughter or son cells. So reproduction involves copying of DNA and other cells apparatus. How we copy DNA will show you on the chromosomes. The copy will be made similar to original and not identical. So similar बनेगी but exactly identical नहीं होती है. Exactly identical they are in just plant case, not in the animal case. Why? We will show you. This progeny is you can say very different in the basis and necessary for evolving of living beings. So ये काफ़ी different है. And variation has species to withstand drastic environment change, thus save the species from becoming extinct and promotes its survival for a longer time. So variation is very important, as you can say it withstands the drastic change. जो भी environment में change होते हैं उसके according ये change हो जाते हैं, आपके individual में changes होते हैं, so that they can survive in the worst condition. As Charles Darwin also said, the survival of the fittest. So it suits here only. Okay, so here till now we are knowing that what is reproduction. So reproduction actually is a biological process by which new individual organisms are produced of its own kind. So here we can say reproduction is a fundamental feature of all living. Okay, that is each individual organism existing as the result of reproduction. So जितने भी लोग हैं वो result है एक reproduction का. That's true. And it is the process by which new organisms generate. So it is the mechanism of copying species continuation. So copying species so that the species can be continued. So it's the process for continuation of the species. Okay, now there is another question, why there is a need of reproduction. So थोड़ा बहुत हमने पहले भी पढ़ लिया था. Actually there is need of reproduction for continuation of life, preservation of species, you can say replacement of dead individual and role in evolution. Here we can see reproduction is the form of life in which living things produce other living things to the same kind. तो reproduction आपने पहले ही पढ़ी है. क्या है reproduction? It is a process by which an individual produces the another individual of its own kind. Okay, next, reproduction is not necessary for life, just like you can say respiration, circulation, nutrition. ये life के लिए is responsible. अगर ये चीज़ें नहीं चलेंगी तो person will be dead. But if the person cannot reproduce, he will not be dead because it is not necessary for life. It's a part of life which is very important for the continuation of the next generation.
सो उसी के जैसे और प्रजनन आपके जन्मे, तो उसके लिए आपका ये रिप्रोडक्शन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. सो दैट इज़ द बेसिक नीड ऑफ reproduction. And here reproduction is also having an important vital role in evolution. How? Let's see. Actually, reproduction occurs with the cell division. Have you heard about the cell division? Cell division. What is cell division? Actually, cell division, all cell arises from one cell. ठीक है, वन सेल जो एक सबसे पहली सेल बनी थी, सारी सेल्स उसी से बनी है. तो ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स, यू कैन से. ठीक है, उसके बाद जो उससे बनी है, ठीक है, और उसके बाद जो नेक्स्ट बनी है वो उन्हीं से बनी है. तो ऑल द सेल अराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स. ठीक है, बाय सेल डिवीजन. Now, what happens when cell grows to a certain size? They must have either divide or die. तो उन्हें बनना ही है, तो वो क्या करते हैं, वो डिवाइड हो जाते हैं. तो डिवाइड हो जाते हैं. If a cell continue to grow without dividing, the surface area of the cell bound become too small to hold the cells contain. तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी. अगर सेल जो है कंटिन्यू ग्रो कर रही है, डिवाइड नहीं कर रही है, तो उसका जो अंदर का कंटेंट होता है, ठीक है, अंदर का कंटेंट कैसे, जैसे आपका क्या हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, गोल्जी बॉडीज हो गई, ठीक है, राइबोसोम्स, लाइबोसोम्स एंड यू कैन से वैक्यूल्स. सो ये आपका कंटेंट जो हो जाता है वो आपका क्या होता है, बढ़ता जाता है. एंड बढ़ता जाएगा तो कंटेंट, तो ये आपका क्या हो जाएगा, क्या वो जो सेल होगी दैट विल बी बर्स्ट, तो वो बर्स्ट हो जाएगी. क्लियर है? ओके. सो हेयर इन द डायग्राम यू कैन सी दैट, डायग्राम में आप देख सकते हो किस तरीके से सेल डिवीज़न होता है. एक्चुअली इट्स अ सेल. सेल में आपके ये क्या प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स प्रेजेंट है, क्रोमोसोम्स जिन पे डीएनए लिखते होते हैं. तो जब सेल डिवाइड कर रही होती है, एक इंडिविजुअल सेल डिवाइड कर रही है, तो यहाँ पे आपके सेल जो होती है, ठीक है, तो जब ये डिवाइड कर रहा है तो यू कैन फाइंड दैट इन द सेकंड फेज होमोलोगस जो क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो आपके क्या हो गए, हेट्रोलोगस हो गए. बिकॉज यहाँ पे आपके क्या हो गया, जो आपके क्रोमोसोम्स हैं, ठीक है, वो ब्रेक होके इंटरमिक्स हो गए हैं सब में. नाउ यू कैन फाइंड दैट न्यू डॉटर न्यूक्लियाई हैव, ठीक है, नया जो डॉटर न्यूक्लियाई आपका मियोसिस सेकंड से बना है. तो इन दैट फेस यू कैन फाइंड दैट देयर आर टू डिफरेंट डॉटर सेल्स. तो डॉटर न्यूक्लियाई है, एंड डॉटर न्यूक्लियाई जो होता है जब थर्ड टाइम और डिवाइड करता है, तो यू कैन फाइंड दैट देयर आर ऑल डिफरेंट डॉटर न्यूक्लियाई आर प्रेजेंट. तो ये आपके चेंजेस होते हैं, ठीक है, एंड इट इज़ ऑल ड्यू टू वेरिएशन. ये वेरिएशन की वजह से ही आपके चेंजेस होते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे बात करते हैं अगर वेरिएशन की, तो वेरिएशन इतना इम्पॉर्टेंट क्यों है, वेरिएशन कैसे होता है एंड इतना इम्पॉर्टेंट कैसे है. एक्चुअली हेयर वेरिएशन जो होता है काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, बिकॉज इट प्रोड्यूस डिफरेंट जीन कॉम्बिनेशन. जैसे हमने पढ़ा था अभी जीन कॉम्बिनेशन किस तरीके से डिफरेंट जीन आपकी कंबाइन कर रही थी इन द न्यू ऑफ स्प्रिंग टू बिकम मोर इम्यून टू अदर डिजीज़. तो यहाँ पे जैसे आप देख सकते हो, ठीक है, इम्यूनिटी हमारी कैसे बनती है, इम्यूनिटी हमारी जब बनती है व्हेन वी आर प्रोन टू सम काइंड ऑफ डिजीज़. तो इफ़ द पर्सन इज प्रोन टू सम काइंड ऑफ डिजीज़, हिज और हर इम्यूनिटी इज़ स्ट्रॉन्ग. उसकी इम्यूनिटी आपकी क्या होती है, स्ट्रॉन्ग होती है. तो विच एज अ रिजल्ट यहाँ पे न्यू ऑफ स्प्रिंग ऑफ बिकम मोर इम्यून टू अदर डिजीज़. तो न्यू ऑफ स्प्रिंग जो होता है वो आपका ज़्यादा क्या हो जाएगा, इम्यून हो जाएगा. नेक्स्ट, वेरिएशन ह्यूमन में क्यों इम्पोर्टेंट है, ये एक्चुअली क्या है, इवॉल्व, ठीक है, हेल्दी लाइफस्टाइल को इवॉल्व कर रहा है. तो दैट्स वाई इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एंड सारे लिविंग इंडिविजुअल, लिविंग थिंग, ठीक है, इवन पैथोजन या फिर यू कैन से फ्लू वायरस चेंजेस एंड अडप्ट. सो वी कीप ट्राइंग टू मेक न्यू फ्लूज वैक्सीन्स ईच विंटर टाइम. तो यहाँ पे आपके क्या होता है, हर चीज़ नई बनती जाती है. तो वी हैव टू ऑल्सो बी रेडी, हमें भी रेडी रहना चाहिए. तो जिससे ज़्यादा नई नई वैक्सीन बनवाएं, एंड नई वैक्सीन्स के साथ हमारे पास आपके ट्रीटमेंट जो, ठीक है, अच्छे हों, हेल्थी हों.
and we could get better treatments. Okay, now next let's start the next topic, that is type of reproduction. अगर टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन की बात करें तो वी आर हैविंग टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन and another is asexual reproduction. Sexual reproduction is the one in which two parents are involved. Okay, and asexual individual is which in which only one parent is involved. Okay, so this is the basic and big difference between sexual and asexual reproduction. ओके, होप इट इज़ क्लियर. सो फॉर एग्जांपल सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस में होता है, ठीक है, यूनियन होता है मेल फीमेल का, तो वो गैमीट्स बनाते हैं. ठीक है, पेरेंट्स जो होता है वो आपकी क्या होते हैं, हाफ जेनेटिक मटेरियल होते हैं, बिकॉज हाफ जो आता है, ठीक है, हाफ क्रोमोसोम आता है मदर की साइड से, हाफ क्रोमोसोम इट्स कमिंग फ्रॉम फादर साइड्स, एंड दैट पॉइंट्स in your that joints in the center. असेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें तो यहाँ पे आपका कोई गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, एंड क्लोन्स आर देयर, एंड क्लोन्स यूजेस देयर यू कैन से इन म्यूटेशन. उसमें जो चेंज होते हैं वो आपके म्यूटेशन से चेंज होते हैं, डायरेक्ट वैसे चेंज नहीं होते, दे आर ऑल सेम. ओके, नाउ द टॉपिक इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन. अगर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें सो लेट्स डिस्कस. तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है एंड सेक्सुअल में क्या होता है, डिफरेंस लेते हैं. असेक्सुअल में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है, सेक्सुअल में टू होते हैं. सेल डिवाइड बाय यू कैन से बाइनरी फिजन, बर्डिंग ऑफ फ्रेगमेंटेशन. हेयर सेल डिवाइड्स बाय meiosis, लॉन्ग प्रोसेस है. वेरी लिटिल चेंज ऑफ जेनेटिक वेरिएशन, तो जेनेटिक वेरिएशन में बहुत कम चेंज होता है. जेनेटिक वेरिएशन इज यू कैन से हेयर ऑफ स्प्रिंग, जो ज़्यादा नहीं आता है. नेक्स्ट, नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स, फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स. नेक्स्ट, ओके लेट्स स्टडी द डिफरेंस बिटवीन सेक्सुअल एंड असेक्सुअल रिप्रोडक्शन. सो देखते हैं हम यहाँ पे असेक्सुअल में वन पेरेंट इन्वॉल्व होता है एंड सेक्सुअल में टू इन्वॉल्व होते हैं. सेल यहाँ पे डिवाइड करती हैं फिजन से, बर्डिंग से, फ्रेगमेंटेशन से, बट यहाँ पे आपका मियोसिस होता है. नेक्स्ट, बहुत कम यहाँ पे जेनेटिक वेरिएशन होता है. जेनेटिक वेरिएशन जो होता है वो आपका, ठीक है, ऑफस्प्रिंग में होता है. नो फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स नहीं फॉर्म होते, ठीक है. तो यहाँ पे आपका क्या होता है, फाउंड इन हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म, तो ये पाए जाते हैं. एंड फॉर्मेशन ऑफ गैमीट्स होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं, मिल जाते हैं. ओके, फाउंड इन हायर कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म. सो इसकी बात करें तो यहाँ पे आपका क्या जाएगा, फाउंड इन लोअर रीजन, ठीक है, ली बैक्टीरियल. And next unit or reproduction is the gamete that result in fertilization. So here